So children, now let's learn sum of roses. See here on the screen, Vivek and Vimla fathers have cultivated hundreds of roses in an acre. Okay, so here Vivek and Vimla, they want to count them all. कितने रोजेस खिले हैं उधर, उनको वो काउंट करने के लिए वो गए, लेकिन इतने हज़ार, मतलब 100, 200, मोर देन दैट, तो उनको कैसा लगा कि वो कैसे सम करें, कैसे ऐड करें। तो वो उन्होंने एक आइडिया किया। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी। ओके चिल्ड्रन, हियर आई हैव सम बर्ड्स, सी। So think these are as roses. Okay, so here I am taking one rose, or you can say birds, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10. So children, here I placed 10 birds over here on the table. A 10 birds is equal to, see here, a bundle. I have tied with this and rubber band. See, ये जो मैंने 10 इधर डाली हूँ ना मैं, तो वो मैं बंडल करके ऐसे लिखी हूँ। आप अगर यूनिट में है तो 1 to 10 आप ऐसे रख सकते हो। इफ़ इट इज़ 10, 11 और समथिंग लाइक दैट, कैसे करोगे आप? तो ये 10 का जो बंडल है, मीन्स इट इज़ इन 10th place. Okay, then if you add, if you take like this, 10 plus 1 gives you 11, like that. Okay बच्चों, तो here मेरे पास कितने हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and if I add these also, 10 means one bundle. Okay, so here if I add this one also, you will get 10 number of bundles. कितने हैं आपके पास? 10 हो गया है ना। एक मेरे पास हाथ में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके बच्चों, आपको पता चला कि कैसे ये बंडल करना है। और ये देखो, ऐसे आप साथ में इफ़ यू टाई विद अ बिग रबर बैंड, देन यू विल गेट 100 numbers of earbuds, or you can say 100 number of roses. Okay, so children, see here on the screen we have, see, in a triangle shape I have given you one unit places, those are 10. ट्रायंगल शेप में आपको यूनिट दिया है 1, 1, 1 till 10, तो 10 ट्रायंगल्स मिला के आपको कितना हो जाएगा? एक 10 का बंडल हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इधर दिखाया, राइट। सो राइट इट इन अ बॉक्स, और यू कैन टेक इट एज अ कार्ड। एक कार्ड में आप 10 लिखे तो वो एक 10 हो जाएगा, लाइक दिस। देन ऐसे आप 10 कार्ड्स 10 कितने करोगे आप? 10 कार्ड्स है ना, 10 का 10 कार्ड्स मीन्स नंबर 10 कार्ड्स यू हैव टू make it 10 number of cards. Then for 10 number of cards you will get 100, right? That is equal to 100. Okay, you have to make a big 100 card. See, like this. Then after that 100 आपको पता चला, 100, 200, 300, आप ऐसे कार्ड्स इकट्ठा करके गए तो आपको काउंटिंग कैसे करना है, सम ऑफ देम कैसे करना है, आपको पता चल जाएगा। ओके बच्चों, पता चला कि आपको कैसे सम अप करना है। यूनिट प्लेस मतलब एक एक है तो आपको कैसे लेना है, और इन केस मोर देन 10 है तो आपको कैसे एक यूनिट करना है। देन इफ़ इट इज़ मोर देन 100, अगेन यू नो दैट हाउ टू मेक अ बंडल ऑफ इट। ओके, पहले एक का
हो गया, फिर बाद में what you have take 10 का 10 bundle, then later you made it in one, that is 100. If you later on 102 bundles over there, then you will get 200. If you take another bundle of 100, it will become 300. Like that, children, you can make till 900 or 1000 also you can make. Okay. So children, now you have learned that how to make a bundle of 10 and make a bundle of 100. You can make also till 900 or 1000 also, right? So here, children, let's take an example of peacock, a dancing queen peacock. पता है ना आपको peacock? तो मोर, उसका हम एग्जाम्पल लेंगे. Here उसका एक मतलब छोटा सा एक शॉप था, मतलब जैसे कि आपका सुपरमार्केट वगैरह होता है ना, ऐसा. तो उसने अलग 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 फ्रूट्स, लीव्स और कैरेट, शुगर केन, ये सारी चीज़ें इट वाज अरेंज्ड इन दी शॉप. ओके. देन one by one animals came to the shop and they were buying and giving some amount to the peacock. Okay children. So here first see in the table we have, first in the column we have animal name, and in the next column we have item purchased by that animal, and then we have segregated और हमने separate किया है कि वो 100 का कितना हो जाएगा, I mean bundles और bunches you can say. And then 10 का bunches कितने हो जाएगा उस नंबर में. ओके. देन यूनिट्स का कितने हैं यूनिट्स उसमें, तो वो हम सेपरेट करके लिखना है. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो हियर इन द फर्स्ट वी हैव नेम ऑफ द एनिमल्स, एंड देन फर्स्ट विल टेक द नेम as monkey. Monkey bought bananas, okay, from the peacock shop. How many bananas it has bought? See, it has bought 245 bananas. कितना? 245. So here children, 200, I am pronouncing it as 200. So bunches of 100, how much it will be? 2, because it is 200, isn't it? See, next bunches of 10, as I have told you, it is 245. So 10 bunches will be 40, means how much it will be? 4. Okay. Then the bunches of, in the unit place, the bunches will be how much? Or you can say, no need to say bunches for that, you just say units. So how many bananas left? Lastly 5 bananas. है ना बच्चों? पता चला आपको? 200 comes in a place of bunches of 100. Then 4 comes under bunches of 10. Then 5 comes in a unit place. Is that clear children? तो next deer आया. वो आने के बाद उसने लीव्स खरीदा. कितने लीव्स? 611 लीव्स. ओके. 611. हाउ टू separate them into 100 bunches and 10 bunches and single. तो here बच्चों 611, 600 ये कहाँ पर आ जाएगा? 100 के कितने bunches है? 6 है ना? और 10 के कितने bunches है? 1 है. 611 है ना? और एक सिंगल आपने ऐड किया तो ये 11 हो जाएगा, है ना? तो एक कहाँ पर आ जाएगा? एट द लास्ट इन अ कॉलम ऑफ सिंगल, है ना? तो नेक्स्ट रैबिट. रैबिट को कौन सा फल अच्छा लगता है और कौन सा वेजिटेबल अच्छा लगता है आपको पता है ना? रैबिट लाइक्स कैरेट, राइट? सो इट केम टू peacock shop to buy carrot. So rabbit ने 380 कितने कैरेट्स?
380 कैरेट को उसने बाय किया। तो 380 आपको इसमें 300 के बंचेस कितने हैं बच्चों, इसमें 3 है, और 10 के कितने बंचेस है 8, एंड इन सिंगल we don't have anything. Okay, see in the screen, you can see it clearly. So next comes elephant. Elephants likes to eat always sugar cane, right? So elephant आने के बाद उसने sugar cane मांगा, तो peacock ने उसको 900 sugar cane दे दिया। कितने 900। तो बच्चों इसमें 100 के कितने बंचेस है 9, right? So 10 के कितने bunches है? How many bunches are there of 10? Do you have any idea? Right. So children, here we don't have any 10th bunches, right? So you have to write it as 0. And in a single place, again we don't have any single. In that column you have to write again 0. So next, squirrel came to buy mangoes. So squirrel 109 mangoes buy किया peacock के शॉप से। Okay, तो इसमें 100 के कितने bunches है? How many bunches are there of 100? There are only 1. And then is there any 10 bunches over there? No, right? So you have to write in that table as 0, and then in a single place it is 9. Is that clear, children? Okay. So next we'll do some abacus activity. Depends on this items which you have shown on the screen about the animals. जैसे कि आपने देखा एनिमल्स क्या क्या लेके आए, पहले कैरेट लिया, मैंगोज़ लिए, लीव्स लेके गए, और शुगर केन एंड बनानाज, सो मेनी थिंग्स दे हैव बॉट फ्रॉम पीकॉक शॉप। तो उसने ऐसे ही दे दिया पीकॉक ने उसको, हाँ, इट हैज़ गिवन लाइक दैट ओनली विदाउट टेकिंग एनी मनी, हाँ. So here children, when you go to the shop, you will give some money, or not only some money, you have to buy the particular, if you want to go buy soap or something, or you can buy chocolate. If it is 5 rupees, then you have to give them 5 rupees only. If it is 10 rupees, then you have to give 10 rupees only, right? So like that, they also gave some number of money to the peacock. Okay, let's learn that money, how is the figure and how to read them and how to do with an activity along with abacus. So children, here I have abacus stand over here with me. So as I have discussed with you this one before, how to use this, right? Here in this, in the left of my side, here I have ones place, and then here I have tens place, and here it is 100 place. This is for 3-digit number. Okay. So children, here जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीकॉक के शॉप में जितने भी आइटम्स बिक गए तो उसको पैसे मिल गए, राइट? तो उसके हिसाब से हम उस पैसे को क्या करेंगे, अभी वंस प्लेस में कौन सा नंबर आ जाएगा, टेंस प्लेस में विच नंबर विल कम, एंड देन in 100 place which number will come, like that we will separate, or we can tell that. Okay, so here the number first, or you can say the monkey has given amount 282 rupees. How to represent this one in this abacus? See here, 282. 200 means in this 100 place 2. This is 100 and this is 200. Okay, next comes 82, right? In tens place it is 80. 8 is there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Okay बच्चों, see here in 100 place we have 2 and in tens place we have 8, and here what it has to come 2 because it is 282, right? So in ones place it will come like this 1, 2. So the number you can say 282. The last 2 digit you have to take along with, means at a time you have to take. ये जो लास्ट में है ना 2 डिजिट्स, ये दोनों आपको साथ में लेना है. So 282. Okay children, is that clear? Let's do with another example. See, next elephant has given 444 rupees. Then how to do this one? How to separate which number will comes in 100 place and which number will come in tens place and which number will comes in unit place, right? So here 444 in all the 3 column, or you can say in all the 3 places 4 is there, right? So here children, first in 100 place 4 is there, 1, 2, 3, 4. Is that clear? Next in tens place again 4 is there, 1, 2, 3, 4. And then in ones place, or you can say unit place, it is again 4, 1, 2, 3, 4. Is that clear children? So how to read this? 444. Is that clear? Next again we'll show you another example. See, next rabbit has given for carrot 168. How to represent this one? In 100 place which number will come? 1, right? 168. Here in tens place it will be 6, right? Because it is 68. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it? Next, in ones place, or you can say in unit place, how much it will be? 8, because the number is 168. है ना बच्चों? So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is that clear children? See, 168. We have to read it like this. In the same way, how to represent these numbers in a place value chart? See here, I am writing how we have done here in this abacus. Same like you have to form the table as I am showing you on the screen. See here, 282. First we have done in this. So how to write those? 2 will come in 100 place, and then 8 will come in tens place, and again 2 will come in ones place. Isn't it? Next, for example, this number 168. So here 1 will come in a 100 place, and then 6 will come in a tens place, and then 8 will come in a unit place. ओके, पता चला बच्चों आपको कैसे करना है? ये 100 के प्लेस में 1 आ जाएगा, देन टेंस के प्लेस में 6 आ जाएगा, देन इन यूनिट प्लेस
कितने नंबर्स आएंगे? 8. ओके, इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो ऐसे आपको प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर्म करना है बच्चों. ओके